Today in English practice book we will do lesson number 8, the magic matchbox. As you have already read this lesson in your English reader book, so let us start the magic matchbox. Worksheet 1. In lesson 10, the magic matchbox, Neha does a lot of work for the witch. अब आपने लेसन में पढ़ा द मैजिक मैच बॉक्स लेसन में आपने पढ़ा कि नेहा बहुत सारा काम करती है विच के लिए. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्क नेहा डज फॉर द विच. अब आपको उस लिस्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स कंप्लीट करना है जो काम नेहा विच के लिए करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द हेल्प बॉक्स. कैचेज, स्टिचेज, cooks, fetches. Neha dash sticks for cooking. Neha fetches sticks for cooking. She catches fish from the pond. She cooks food. She stitches clothes for the witch. All these words which tell us about some action are called डूइंग वर्ड्स. अब वो वर्ड्स जो हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताते हैं कि ये काम हो रहा है उसे हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं. नाउ वर्कशीट 2. नेहा इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स नियर द जामुन ट्री. एज यू आर लुकिंग इन दिस पिक्चर, look at the picture and complete the sentences with words from the help box. Now look at this picture carefully and with the help of this picture and help box you have to complete these sentences. First of all read the help box. Collecting means इकट्ठा करना. Climbing चढ़ना. Sitting, eating, watching. Now Neha is dash the tree. Neha is climbing the tree. Bhima is dash on the tree. Bhima is sitting on the tree. Kavita is dash Neha. Kavita is watching Neha. Karan is dash jamuns from the ground. Karan is collecting jamun from the ground. Kareem is dash jamuns. Kareem is eating jamuns. Okay. Now worksheet 3. Underline the doing words in the following sentences. इन sentences को पहले read करिए one by one और फिर आपने underline करना है doing words. जो वर्ड्स हमें ये बताएंगे कि एक्शन कोई हो रहा है. रजत गोज टू स्कूल. नाउ गोज इज अ डूइंग वर्ड, जाना, तो हम गोज को अंडरलाइन करेंगे. माई मदर कुक्स टेस्टी फूड. कुक्स. द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट. रनिंग. वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुली. क्रॉस. She sings beautifully. Sings. They are playing cricket. Playing. The maid washes the dishes. Washes. Neha is watching television. Watching. Now these all words are doing words or action words. Now worksheet 4. Look at the pictures and make sentences to tell what the person is doing. Now look at this picture and you have to write one sentence what you can see in this picture. A man is reading newspaper. A girl is dancing. A boy is climbing on the ladder. A girl is painting a picture. A teacher is writing on the blackboard. Now worksheet 5. Write any 8 words you know that end with TCH. अब आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनकी जो एंडिंग है वो TCH से
होती है, लाइक मैच, पैच, वॉच, कैच, स्विच, हैच, इच, विच. Okay, now complete your this lesson and read it carefully. Okay, have a nice day.